Assalamualaikum. This is Shahbaz Talib. Welcome to Shahbaz Talib Jammu YouTube channel. Today I make this video in a two language, English as well as Urdu, because my foreign country viewers they ask me very strongly, Mr. Shahbaz, make a video in English. So I decide today I make this video in two language. This video is a practical video, so I teach how to make Aloe Vera oil. आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एलोवेरा ऑयल कैसे बनाया जाता है। आज की वीडियो दो जबानों में होगी क्योंकि फॉरेन कंट्री के जो व्यूवर्स हैं वो बहुत ज्यादा उनकी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन थी कि मिस्टर शहबाज आप जो है इंग्लिश में वीडियोस बनाएं। तो मैंने डिसाइड किया कि आपको दोनों जबानों में सिखाएं। जो लोग इंग्लिश समझते हैं वो इंग्लिश समझ लेंगे और जिन्हें उर्दू में समझ आती है वो उर्दू में समझ लेंगे। Let's start today practical, and this is a practical video because Aloe Vera oil is a very good and they have a lot of benefits for our hair. So this recipe is a very good recipe for our hair, and this recipe also work for hair growth as well as those hair they are damaged or they are something they are shrinked. So this is a very good effect for these things. So let's start this business because this business is a very small business and you start this business with small investment. So that's why this is a very good opportunity. We start this business with small investment. आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ आना चाहते हैं, अपना एक अच्छा ब्रांड खड़ा करना चाहते हैं स्किन केयर के अंदर। प्रैक्टिकल Aloe Vera oil recipe contains some major ingredient. So first ingredient is coconut oil. Here I choose coconut oil. You use any vegetable oil. They are suitable for her human skin and her human hairs. So second I choose aloe vera. So I take this aloe vera plant. So I cut one or two pieces of this plant and then I soaked in the water and clean very clearly because all dust and toxic material out. And third basic ingredient of this recipe is vitamin E, and fourth is fragrance oil. Here you can use essential oil as well as you can use perfume oil. Secondly, I share apparatus of this recipe. We need some apparatus like we have need one spoon, one bowl, and this is for washing bowl, and we have need some glass jar. Some beakers, one amber glass bottle, empty amber glass bottle for containing oil, weighing scale, this is a plate, some plates, one spoon for handling oil, one jug of water, so one knife, right? And also we have need coffee beater as well as we have need spatula. आज की रेसिपी जो है इसके अज्जा में कोकोनट ऑयल है। एलोवेरा के पौधे से हमने फ्रेश एलोवेरा लेना है और इसको छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमें ज़रूरत है विटामिन ई की और परफ्यूम ऑयल की। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की तो हमें इस तरह का एक स्पून चाहिए, इस तरह का एक हमें बाउल चाहिए या फ्राई पैन चाहिए जिसके अंदर हम एलोवेरा को फ्राई करेंगे। उसके बाद हमें ज़रूरत है इस तरह के बाउल की जिसके अंदर हम एलोवेरा के पीसेस को वॉश आउट करेंगे। इसके बाद हमें इस तरह के शीशे के जग की ज़रूरत है, ये छोटे छोटे जार जो है इनकी ज़रूरत है। उसके बाद बीकर चाहिए, वेजिंग स्केल चाहिए, हमें इस तरह का हमें जो है नाइफ चाहिए। उसके बाद एम्बर ग्लास बॉटल चाहिए एम्प्टी। जब हमारी फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी तो हम इसके अंदर इसे महफूज कर लेंगे। तो आप इसे बेच भी सकते हैं, आप इसे सेल्फ यूज के लिए भी रख सकते हैं। इसके बाद हमें इस तरह की प्लेट्स चाहिए, चम्मच चाहिए, एक जग पानी का चाहिए, दैट्स ऑल। ये सारे के सारे जो चीजें हैं ये इस रेसिपी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एलोवेरा के पौधे से एलोवेरा के पीस को या पत्तों को काटेंगे। इन सेकंड स्टेप वी टेक सम पार्ट्स ऑफ फ्रेश एलोवेरा प्लांट एंड देन वी वॉश आउट एंड कट इन स्मॉल पीसेस। Yes, firstly we cut this piece of aloe vera and put here, and secondly we cut this piece of. Here is some toxic place, so we soaked this place in water. We must remove this toxic part, then we use this aloe vera piece, fresh aloe vera, right?
अच्छा, आप देख सकते हैं, ये देखें येलो कलर का टॉक्सिक इसका निकलना शुरू हो गया है। याद रखें ये टॉक्सिक है, ये पौधे की टॉक्सिसिटी है, इसको लाजमी तौर पे रिमूव होना है। आपने क्या करना है, इसको पानी के अंदर डिप रखना है और ये खुद ही 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये टॉक्सिसिटी जो है सारी की सारी इसकी निकल जाएगी। उसके बाद इसे क्या करना है, अच्छी तरह से पौधे को मुकम्मल वॉश कर देना है, यानी पौधे के जो हमने पत्ते काटे हैं या ये पीसेस जो काटे हैं इसको अच्छी तरह से वॉश आउट कर देंगे, जिससे इसकी सारी डस्ट उतर जाएगी। उसके बाद इसको हवा के अंदर खुश्क कर लेंगे। खुश्क करने के बाद इसके हम स्लाइस बनाएंगे। Firstly, we remove this toxicity they are inside the plant, so we put this piece in water. If your skin is irritated or maybe your skin is allergic, so you put this part of the aloe vera in water for 24 hours and you change water 3 to 4 times. Like this, they are all toxicity gone. Then you use these pieces and you cut these pieces in a small slices, right? So this time I soaked this part of the fresh aloe vera, so this soaked in the water. So after few minutes I change this water and then I put the fresh water, right? After 24 hours I change water 4 to 5 times. So I cut this part of this aloe vera, this time, and then I cut this tail of this aloe vera. So then I cut into small pieces like this, not very big, not very small. So you cut aloe vera, fresh aloe vera in this, like this pieces, right? And then you cut the tail, right? So I cut this aloe vera into small pieces. अच्छा, अलोवेरा को आपने छोटे छोटे इस तरह टुकड़ों में काटना है, ना बहुत छोटे होने चाहिए ना बहुत बड़े होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप इसका तरीका देख लें कि इसको आपने क्या करना है, ये चीज इसकी रिमूव करनी है। आपने इस तरह से इसको रख लेना है, इस तरह से रख लेना है और इसको साइडें इसकी उतार देनी है, राइट, ठीक है। इसकी साइडें उतार देनी है। उसके बाद इसको साइड इधर प्लेट में रखते जाना है, ठीक है। इस तरह से इसकी साइडें उतारते जाना है और साइडें अच्छी तरह से उतार दी हैं आपने, राइट। इस तरह से आपके हाथ पे ग्लव्स होने चाहिए, सर पे आपके नर्सिंग कैप होनी चाहिए। मैं तो जस्ट आपको प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, इस वजह से थोड़ी सी कोताही हो गई है, लेकिन बट आपने बी केयरफुल रहना है। यू यूज ऑल सेफ्टी इक्विपमेंट, लाइक you must wear a plastic gloves as well as you wear a nursing cap. ओके, इसको इस तरह से साफ करते जाना है, ठीक है। इस तरह से इसको भी थोड़ा सा बड़ा छोटा कर देना है और इसी तरह से ये सारे जो साइडें हैं इसकी क्लियर कर देनी है, यानी बिल्कुल इस तरह से इसको काट देना है, राइट। और इस तरह से ये भी बड़ा है, इसको भी छोटा कर दें। ये बहुत छोटा है, इसको ना है वे, क्योंकि जब इसका स्लाइस बनाएंगे तो मुश्किल आएगी आपको, राइट। उसके बाद ये ओके। अभी आप क्या करें, इसको छोटे छोटे पीसेस में काटना शुरू कर दें इस तरह से। यू कट लाइक वेरी स्मॉल स्लाइस, राइट। और इसको कट करने के बाद इधर ऐड करते हैं। चल रहा है, बंद कर।
So now we check the weight, how much the quantity, and then we decide how much oil we have need, right? We put this plate and then we check the weight. Okay, so this let's see. Okay, this is almost 100 gram, so we use 200 gram coconut oil. So we take 200 ml of coconut oil. Gram or 2 ml both is okay. Okay, this is a 200, right? You see, this is 200 ml, right? So now we put all this oil in this fry pan and we fry all this material. अभी ये ऑयल हमने इस फ्राई पैन में डाल दिया है और इसको हम बॉयल करेंगे. जैसे ये गर्म होगा उसके बाद फिर हम अलोवेरा डालेंगे. सो इस वक्त हम ये ऑयल डाल के फ्राई पैन को ऊपर रखेंगे. जब ये हल्का सा बॉयल होना शुरू होगा यानी ऑयल गर्म होगा उसके बाद हम ये पीसेस जो है अलोवेरा के हम इसके अंदर डालेंगे. नाउ वी ऐड अलोवेरा इनसाइड द ऑयल. अभी हम अलोवेरा को ऑयल के अंदर डाल रहे हैं और इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे. ठीक है जी, 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाएगा. जब ये अलोवेरा के जो पीसेस हैं ये सारे के सारे ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद हमने इसको स्टे करवाना है यानी आग बंद करनी है. तब तक आग जलानी है जब तक ये पीसेस जो है सब्ज़ कलर के मौजूद हैं इसके अंदर. सो वी वेट for 10 to 15 minutes. After 10 to 15 minutes all the Alovera pieces will be brown. These green pieces change into brown color, right? So that means all the water is gone. We cooked very well and ये हमने बहुत अच्छी तरह इसको कुक किया है. अभी मैं इसको शीशे के इस तरह बाउल में डाल के दिखाता हूँ आपको कि इसकी असल कंडीशन क्या हो चुकी है. अंदर से सकते हैं कि ये ग्रीन था और इस वक्त ये ब्राउन हो चुका है. ठीक है, चेंज द कलर फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन. ओके, आफ्टर कुकिंग. सो नाउ वी फिल्टर ऑल दिस मटेरियल इन दिस jar. Let's see. First we put this and cloth, a piece of cloth, and then we bind this piece of cloth, and this is a filter, but this is a very old and traditional types of the filter, so you can use this cloth filter or maybe you use paper filter, both is okay, right? So हमने इसको filter बनाया है. अभी अब क्या करते हैं, इसको हम filter करते हैं, right? आस्ता आस्ता आराम से करना है, ज़्यादा रश नहीं करना, क्योंकि जल्दी जल्दी करेंगे तो ये सारे का सारा जो है आपका वेस्ट हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा. बहुत ध्यान के साथ, क्योंकि ये बड़ी स्ट्रगल के बाद ये अपना इसको हमने अचीव किया है, तो इस वजह से ये ना हो कि हमारी अपनी मिस्टेक की वजह से ये ख़राब हो जाए या इधर उधर गिर के वेस्ट हो जाए, राइट? सो वी फिल्टर ऑल द मटेरियल like this. Right, now we open the filter and we see our final product. So be careful. Oh, well done. This is our final product. You see, this is a coconut oil, this is a aloe vera oil. This is a very good for skin, especially this is a very good for hair. So this is especially tonic for hair, and this is a very good for damaged hair, and also this is very good for regrowth. So we can use this for hair regrowth. So this is my personal experience. I use this tonic many times. So after thinning and after damage,
now my hair with this product is very good. So this you see, this is a final product. So अभी हम इसको चेंज करेंगे, इसमें अभी हम विटामिन ई को शामिल करेंगे और विटामिन ई के साथ हम इसके अंदर जो है इसमें खुशबू भी शामिल करेंगे, राइट। और इसको अभी हम क्या कहते हैं, यू ऐड सम 25 ml के अंदर 2 ml आपका विटामिन ई जाएगा और अभी विटामिन ई इसके अंदर हम 2 ml ऐड करें क्योंकि ये काफ़ी थिक होता है। विटामिन ई इज़ अ वेरी थिक, सो वी ऐड लाइक this thick vitamin E is thick like honey, right? Okay, this is our final product. So after mixing vitamin E and fragrance, check the product, right? Check the thickness. This is look like gel. फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो चुकी है, स्टिकर लगा के आप इसको मार्केट कर सकते हैं। दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट, सो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। जी आज की प्रोडक्ट एक बेहतरीन प्रोडक्ट है और स्पेशली हेयर ग्रोथ के लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने इसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया है तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप इसको अपनी सेल्फ यूज़ के लिए भी बना सकते हैं और आप इसको बना के बिजनेस भी कर सकते हैं। एक छोटा सा बिजनेस आइडिया है, ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू हो सकता है। इतने भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बताई गई हैं या आपको जो जो चीज़ें बताई गई हैं टेक्निकली उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। वस्सलाम, पाकिस्तान पाइंदा।